Yeah, we are live now. Great. So Catherine, Chetramji, hearty welcome to both of you. And on this World Environment Day with thematic focus for the year on ecosystem restoration, I'm delighted to have you all at the launch ceremony of this creative work, an ode to indigenous food, sustainability, and tradition. It's absolute honor to have Ms. Catherine Fisher, North India Public Diplomacy Officer, US Embassy in India, and Shri Chetramji, who has done exemplary work for village development in Baripada of Dhule district in Maharashtra. Thanks to both of you for keeping time for us. Shukriya Chetramji, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको. Catherine is joining us sitting in US, and Chetramji is his village has poor connectivity, so he had to travel a little far to be a part of us today. इसके लिए बहुत-बहुत इतना पेंस लेने के लिए चेतराम जी कि आप इतनी दूर आए अपने गांव से हमें हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया चेतराम जी. As we realize that this pandemic has suddenly brought our focus back on health, immunity, food, and climate change issues, we felt the need to underline the aspects of indigenous food system and our food tradition. And while thinking of the format to package our idea about climate resilience and all aspects of sustainable culture, we realized that we could use the power of words and visuals to convey better. And communication is possible when there are people to inspire around you. Communication is natural when it's about the thoughts we feel so passionately about, and communication is finally a bond when there is a purpose. This work, weaving words and visuals, is dedicated to the people who have lived a very simple life, toiled hard, and have valued, conserved, and worshipped the gifts of nature. They are the treasure beds of indigenous culture, biodiversity, and nutritionally rich, unique to the soil, and climatically sturdy food and crop varieties. And they all remain our guiding lights, men and women, young and old, commanding scientific know-how and age-old traditional wisdom, both. Many of whom are present in this program today at our request, watching us live. Sona Maati के इस live stream आयोजन में मौजूद सभी साथियों का हार्दिक स्वागत. And no creative work is without the people who are with you unconditionally. People who give strength, who trigger and bear your outpouring, who keep you warm, and those who offer constructive criticism also. With heartfelt thanks to all, I wish to acknowledge Madam Manju Joshi ji. She's Secretary of Center for Community Economics and Development Consultant Society with 4 decades of experience working with grassroots community who helped conceptualize the idea and keep our focus. And my special thanks to Shri Prem Prakash ji, seasoned journalist with Indian Express Group and an accomplished poet and writer living in Delhi who inspired the frame of expression, sound and feel of Sona Maati. The field support of Shri Bajrang ji and Balbir ji to capture right frames, Shri Alok ji for his energy to whole team at all stages of shoot process and entire production team with Aishwarya, Ankit, Surendra and Rajiv, and more inputs from the lensmen at work in different places. And also people who have special appearances at request, Loshika and Pia. And this whole team could not be together without production support of Vibhuti and Charu, deputy directors of the organization. I would now request Vibhuti to kindly take us along the quick journey and the context. Over to you, Vibhuti. Thank you so much, Ipraji. Dear friends, for us at CECOEDECON, the environment is at the very foundation of our inception, as the organization was founded as a response to relief and subsequently rehabilitation needs in the aftermath of the 1982 floods in Jaipur and surrounding areas. This commitment to the conservation of the environment has been central to our organizational ethos over the almost 4-decade-long history of CECOEDECON. The organization, in the leadership of its visionary founder, Mr. Sharad Joshi, has paid specific emphasis to the issues of environment in all its various interventions over the years, and has created many innovations and models in the areas of natural resource management, sustainable agriculture, climate change adaptation, etc., with the strong backing and support of our partner communities. Its bottom-line approach on water management and governance have resulted in the creation of over 250 small and large water conservation structures.
From community forestry and large-scale plantations to the more recent efforts towards conservation of khejri, a native variety of desert plant, CECOEDECON has been actively taking up conservation issues at the local levels. Participatory approaches promoted by the organization have helped in fostering environment champions across different generations and beyond gender differences. From the Mahila Mates, the barefoot women water engineers of the 1980s and 1990s, to the youth climate reporters of the present, the organization has mobilized lasting community support on environmental concerns, leading to the sustainability of its initiatives. Whether it is the innovative smart farming model being promoted by CECOEDECON or the showcasing of traditional varieties of food through its unique food panchayat events, the organization has been actively engaging with sustainability issues in the environment space, right from the farm level to creating mass awareness on sustainability, health, and nutritious diets, as well as meaningfully engaging with the state and national governments and international dialogues on the subjects of environment, sustainability, and climate change. Realizing the importance of reviving environmentally sound practices in our production and consumption systems, CECOEDECON has been working on documenting the importance of traditional and indigenous varieties of food in Rajasthan and with the support of partners in other parts of the country, having created demonstrations on seed banks, horticulture practices, etc., to conserve the traditional food knowledge. The organization envisages to continue its active engagement on the dialogue on food and nutrition security and the imperatives of incorporating traditional varieties in a food basket. The ongoing pandemic and living in COVID times has further reinforced the importance of environmental conservation and nutritious diets. The need to revamp our food and nutritious practices cannot be overemphasized. Traditional food varieties provide the most accessible and low-cost, long-term solution to many environmental and health challenges. Sona Maati is a part of CECOEDECON's efforts to raise awareness on the significance of traditional food, to our food and nutrition security, and to call for coordinated actions towards their recognition and prioritize promotion at all levels. The release of this short video is a small step by CECOEDECON to strengthen the movement in support of traditional and indigenous food varieties and to raise voice for stronger actions in the lead up to 2023, the International Year of Millets. I'm thankful for the support Ms. Catherine Fisher from the US Embassy has led to the small initiatives by agreeing to release the video, and to Chaitramji for joining us to share his experiences, and also to all of the participants for being a part of this event. I thank you all, and I hand it back to Shipraji for taking the event forward. Thank you. Thank you, Vibhuti, for this wonderful background. May I now seek permission of our esteemed guest, Ms. Catherine from US Embassy and Chaitramji from Maharashtra, to allow us to open the production for public viewing. Chaitramji, आपकी अनुमति के साथ ये रचनात्मक कार्य सबको समर्पित करने की आप लोगों से इजाजत चाहिए. This is just 5 minutes film, and then we will have our guests to share their thoughts on. Your permission. So we can play. Yeah. शुरू करेंगे. शुक्रिया. Sona Maati. हिमालय अभिमान का देश, अरावली की शान का देश, दूब, दूध और धान का देश, किसानी परिधान का देश, बूंद बूंद की कीमत जाने, परंपरा की फुर्सत थामे, रहन सहन की देसी माटी, सोना माटी, सोनार माटी.
पुरखों की बातें मन की क्यारी में, धान का बोरा बखारी में, आज भगोनी पकती खुशबू, मन बहुरंगी देसी हरसू, सेहत संग चौपाल हमारा, नाता कुदरत गहरा वाला, साथ बरतती देसी थाती, सोना माटी सोनार माटी। मेघ के छम छम नाम छबीसों, रेत पे घूमर कोसों कोसों, 5 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी, अन्न उपजे जो जाने बूझे, कोस कोस के स्वाद को पूजे, खान पान की बात निराली, सोना माटी सोनार माटी। फसल पके भरे कुठियारा, माटी मेहनत और उजियारा, हरियाली संभाल की दुनिया, गोवर्धन धन धान की दुनिया, खाट पुरानी बात भी खाटी, देखी परखी ढोरारी माटी, केसरिया संगीत की पाती, सोना माटी सोनार माटी। सोना रामन माटी राघर, पचरंगी पचकूटे को धर, रूख रसूख से सबने बोए, ताल बावड़ी सब सुख होए, बीज बैंक और सौर तश्तरी, क्षय से अक्षय छात तप रही, गांव गांव और ढाणी ढाणी, सोना माटी सोनार माटी। ज्ञान विज्ञान अजान नहीं अब, लिट्टी चोखा दाल बड़ी सब, जैसा खाना वैसा चखना, मन मोदक तन तिल तिल गहना, 12 बरस बरनी में जाए, धीमे में स्वाद चखाए, पात पात खिलवाड़ की डाली, सोना माटी सोनार माटी। खींच खींचड़ा राब राबड़ी, पाफर बड़ी चटखार खाखरी, बेर डांसरा कैर सांगरी, मरुस्थली का थाल बांसुरी, पत्तल दोने माट सकोरे, मिट्टी में मिल मिट्टी होले, हवा देश की रही बुलाती, सोना माटी सोनार माटी। लौट लौट जड़ फिर आ जाए, पाहुन की पगडंडी भाई, घर घर सहजन खेत खेजड़ी, जुआर बाजरा मकई बेजड़ी, अन्न हमारा माटी अपनी, नहरों का मन पाती पाती, जलवायु बदलाव के साथी, सोना माटी सोनार माटी। Thank you. This link can be shared in the live chat also. And may I now request Ms. Catherine to share her thoughts. And Catherine, this whole work was incomplete. And meanwhile, the lockdown was implemented. So, I mean, all the challenges of lockdown and, these limitations, we still had to work on it, and we could finish it up, using our time of that lean period also. So quickly to introduce Ms. Catherine to the audience, Ms. Catherine Fisher, the North India Public Diplomacy Officer, has previously served in the Operations Center, the Bureau of Public Affairs, the Philippines and Brazil. Prior to joining the Foreign Services in 2011, she and her partner
created and operated speakeasy theaters with restaurant movie theaters in Oakland and El Cerrito. That's quite exciting in California. She received her undergraduate degree from Wellesley College and chef training from the California Culinary Academy. She has served in the boards of the Junior League of San Francisco, the East Bay Agency for Children, and Berkeley School Excellence Project. She has 2 children also. So over to you, Catherine, and thanks again for consenting to be a part of this journey. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shipramatur. I am honored, and very difficult to have to speak after watching that film. That was beautiful. I just want to sit back and let it wash over me a few times. It's just the imagery, the words, Sona Maati, all the golden soil, all, and as a former chef, the food and the different spices and that varies down the road by kilometer. I mean, sorry, I'm going off my remarks because I am moved by it. And then just the sounds and sights of India and Rajasthan that I miss so much after this lockdown, all of us being, cooped up and not being able to be out. And I cannot wait for this to be over and to come out and back in and meet you all in person and see places like this. So I will go back to my remarks. As you said, my name is Catherine Fisher, and I am the Public Diplomacy Officer for the North India Office of the U.S. Embassy in New Delhi. We're a young office. We were created in 2015 to expand the links between the United States and the North Indian states. And, we cover all this region, which of course includes Rajasthan. Our office is all about strengthening the relationships with state and local governments, business communities, academic institutions, and civil society and people. It's the people that make all this up. We do all these different programs and outreach to get and engage with people. I tell everyone, and at mornings like today for me, I have the best job in the world because I get to reach out and engage with people like you. And I cannot wait to be able to go out and do that for real and to move beyond our virtual interactions. I am so happy to participate with this, and I want to thank Dr. Shipramatur, who's a U.S. State Department's exchange alumni, for inviting me to this ceremony and for her contribution to this creative work. I love the way that creative works weave serious issues in a way that inspires us all to take action, which I am very inspired this morning. And I want to share with you that earlier, back in April, Dr. Mathur and I met, and we had a great conversation and talked about sustainable growth and climate change in Rajasthan and how important it is. So I was really happy to hear about all that she has done. She went on at a U.S. exchange, and then since then has done so much great work, had all these opportunities, and she's been contributing in the fields of media teaching and advocacy, gender equality, women empowerment, human rights, and other socio-development issues. So great impact. Climate change is one of the most urgent issues, and our very survival is linked to this. So it's wonderful to see the impact people are making on trying to draw attention to this and addressing it. People are focusing more now on food and health and diversity and all the knowledge and awareness about how climate change really impacts food security by affecting both the agricultural, crop and livestock, as well as all the activities that rely on our natural resources like forestry and fisheries. And the effects of climate change on agriculture go beyond just reductions in yields, but influence how farmers make choices about timing, planting, soil management, spatial distribution of crops and varieties, and all the traditional food processing and preservation techniques
that rely on environmental and climate resources. So they're really vulnerable to climate shifts. So it's great work to be doing research and promoting what, you know, people have known for centuries and how that really matters and impacts. But also the ways that, you know, we work together and to both develop policies and investments and highlight what's important, especially for agricultural dependent countries, which need like climate smart rural areas, which work with millions of people in the process and work on all these initiatives. And some are, you know, kind of have quick and easy returns. Others take time in the long run. Communities really need to be encouraged and supported to participate. And both, you know, look at indigenous food systems and new and improved green technology, like how can what we know now impact what we've done, so we can all work together and find the very best practices going forward, and incorporate renewable energy and all the food traditions. So the US government is focusing on measures to reduce the impact of climate change, including through initiatives to accelerate innovation and research and development in agricultural and food systems in order to spur low carbon growth and enhance food security. We also support the sharing of knowledge and best practices. For example, the alumni of exchange programs like the Fulbright Nehru and International Visitor and Leadership programs are leaders in many walks of life, including agriculture, the environment, and green technology. Another example is Partnership 2020, which was inspired by the belief that US and Indian universities can create tangible economic development in our two nations by working together, by sharing best practices. The goal is to create programs that funds collaborative research in 10 strategic areas, including sustainable agriculture, water management, and renewable energy. And I see how this creative narration is covering a whole range of food traditions as well. So just all the ways by collaborating and sharing best practices, highlighting what has worked for centuries and using innovation to improve where we can, to really address and impact and work on climate change. So I want to congratulate CECOEDECON, which undertook this task and conceptualized this program. Everyone deserves applause. I'm also really glad to see so many young students joining us today. As you know, you're the champions of the future. Climate change impacts over time, and of course, it's, you know, I'm old. It's my children and my children's children and your children that are going to be facing it more and more. But it's also all of you that have the energy and the innovation to continue to address this. I mean, and participating in events like this is, again, it's about working together, coming up with these creative solutions and taking action, whether it's through education or technology, science, influencing laws and policies, and mobilizing the youth to show the massive power that they hold in making decision makers accountable and finding solutions for sustainable development. We have to amplify these voices to protect the future of our planet and enable them to participate in climate action by providing them opportunities to learn and safe places to exchange knowledge. After all, you know, you're the agents of change, the entrepreneurs, the innovators of the future. So our office tries to reach out to young people like you and other emerging voices to strengthen your actions, create a positive impact, have, again, sharing best practices. I'm so happy to be here with Shitramji, as I've seen from this video, and I've been learning about the work he's doing in sustainable villages. And I cannot wait to the day I can come back out to Rajasthan, which I love so much. It reminds me of my home state of California, and to see firsthand all the works being done on climate change. So thank you very much. I am honored to participate. Thank you. Thank you, Catherine. Thank you for these
inspiring words and giving us so much of strength that we are on the right path. And yes, youth is the champion for future, and more they understand, I think more it is worth investing into the knowledge domain also. And it's so important to be a part of this whole ecosystem, wherein we as maybe knowledge partners, we as innovators, we as citizens, we all collaborate together to make this world a beautiful place to be. And we have some people from academia also joining this meeting. I've just seen some messages in my WhatsApp chat also. So they are also conveying their thanks to Catherine to be agreeing to be with us today. Thanks, Catherine. चेतराम जी, अब आपसे आग्रह है कि आपकी बात सुने हम, और आपने बेहद गहरा काम किया है, दशकों की मेहनत की है वनवासी कल्याण आश्रम और जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से। आपने आसपास के गांव की किस्मत भी बदली है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। जैव संरक्षण का काम भी बहुत सारा किया है। तो मॉडल गांव की जो अवधारणा को साकार आपने किया है, आपकी उपस्थिति हमारा सम्मान, हमारा मान। तो आदरणीय चेतराम जी, आपसे भी उम्मीद कि आप कुछ अपने शब्द कहें। और मैं थोड़ा सा आपको भी बता दूं, कैथरीन ने इस पूरी बात को अपने इसमें ये भी समाहित किया कि किस तरह से जो इकोलॉजिकल पूरा सिस्टम है उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे काम हैं, उनसे लोगों को जोड़ने में उनका ऑफिस मदद करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद करता है, स्टूडेंट से जुड़ने आगे बढ़ाने का काम उनके ऑफिस के माध्यम से हो रहा है। तो चेतराम जी, आप अपनी बात कहें, आपका मंच। सबसे पहले तो कैथरीन मैडम और माथुर मैडम, आपका मन से धन्यवाद करता हूँ, और सभी ग्रुप को मैं नमस्कार बोलता हूँ। आवाज आ रही है मेरे? हाँ, बिल्कुल आ रही है चेतराम जी, बिल्कुल। तो जो फिल्म दिखाई गई, जो कविता बनाई गई सोना माती, मुझे लगता है कि बारीपाड़ा का जो पूरा विषय है उसी में आ गया है। बहुत अच्छी फिल्म है, और पर्यावरण पर जिसको काम करना चाहिए, जिसको काम करने की मनुष्य रखते हैं, उन्होंने ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। बहुत शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा सारांश लिया है। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ आ गया, फिर भी मैं थोड़ा पॉइंट जोड़ने का प्रयास करता हूँ उसमें। तो बारीपाड़ा में जो काम शुरू हुआ वो 91 में वैसे तो शुरू किया आपने। तो बारीपाड़ा में काम शुरू करने के लिए जिससे हमें एनर्जी मिले है, उसमें एक दो संस्थाएं हैं, जैसे कि वनवासी कल्याण आश्रम नाम के एक संस्था जुड़े पूरे देश भर में काम करते हो। उसके साथ साथ में योजक नाम की संस्था है, रीड करके है, जन सेवा फाउंडेशन है। ऐसे 3-4 संस्थाओं ने मिलकर बारीपाड़ा में हम अलग अलग कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम शाश्वत विकास की तरफ जा सकते हैं। तो पिछले 30 साल में बारीपाड़ा में जो भी कुछ हुआ है, उनमें से विशेष करके 5 बिंदु है, जिसको हम जंगल, जल, जमीन, जन और जानवर इसको कहते हैं। ये 5 बिंदु ऐसे है कि हमें कोई भी काम करना है, शाश्वत डेवलपमेंट करना है, तो ये 5 बिंदु हमें आवश्यक है। और इसको हम हमारे देश में अवेलेबल है, हमारे गांव में अवेलेबल है। हमें कहाँ से उसको इंपोर्ट करने का नहीं है। हमारे आसपास जो संसाधन है उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, यही बारीपाड़ा में हमने करने का प्रयास किया है। उसमें जैसे कि जंगल है, हम कहते हैं कि जंगल यानी पर्यावरण का एक बिंदु है। पर्यावरण में बहुत चीज आते हैं, जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन, ये सब उसी में आ जाते हैं। तो हम जंगल से शुरुआत करें बारीपाड़ा में, क्योंकि जंगल है तो जंगल को हम सब कहते हैं कि जंगल यानी जननी है वो सब योजनाओं की। जंगल है तो जल है, जंगल है तो पानी है, जंगल है तो भूमि है यानी सोना माती है, जंगल है तो हमारा गोधन है, और जंगल है तो हमारे ऑर्गेनिक खेती है। ये लिंक जुड़ा है। तो गांव में गांव को हमने संगठित करने का प्रयास किया वनवासी कल्याण के माध्यम से, और लोगों के मन में ये ला कर दिया कि अरे हमें तो पर्यावरण पर आधारित अगर जीना है, तो हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसको हमने समाप्त कर दिया तो हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है पूरा। तो हमें हमारे आसपास जो संसाधन है उसको हमने टारगेट किया, और गांव ने सबसे पहले किया तो वन संरक्षण का काम शुरू किया 91 में। तब JFM करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक योजना चल रही थी,
उसमें गांव वालों ने गांव के आसपास जो भी जंगल हो बचाने का प्रयास किया। देखते देखते उसके कुछ रूल बनाए गांव वालों ने, जो कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको 1,000 रुपए जुर्माना है। अगर जंगल परिसर में कोई अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है तो उनको 700 रुपए जुर्माना है। सर पे कोई मूली उठा के लाता है जलाऊ लकड़ी की तो उनको भी जुर्माना है। इसलिए रखवालदार जो है, वॉचमैन जो गांव का होना चाहिए। तो अगर गांव का वॉचमैन है उसको उसको तो मानधन देना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा तो देना चाहिए। तो हम अनाज रूप में उनको देते, ये रूल बन गए। तो गांव वालों ने वो फॉलो करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट और गांव करे, दोनों को मिलकर ये काम शुरू हुआ। ध्यान में पता चला जन सेवा फाउंडेशन, योजक संघ के कुछ अलग अलग संस्थाएं, कल्याण आश्रम में, उन्होंने ये ध्यान में ला कर दिया कि हम खाली वन संभाल के हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होने वाले। हमें अगर शाश्वत चलना है, सतत ये काम करना है, तो हमें और बिंदु उसको जोड़ना चाहिए। तो उसमें जल व्यवस्थापन का विषय आ गया। तो बारीपाड़ा में जल व्यवस्थापन में हमने छोटा सा काम किया, जिसे हम लूज बुल्डर बोलते हैं। छोटे छोटे बांध बनाए, उसमें मिट्टी रुक गए, यानी मृदा संधारण का भी काम उसमें जुड़ गया। तो वन संवर्धन के साथ साथ जल संवर्धन का काम शुरू किया। और विशेष करके पूरे देश में से 4 जल तज्ञ बारीपाड़ा में आ चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आए थे। उसके बाद में डॉक्टर माधवराव चित्रे करके उन्होंने विजिट किया। ऐसे कुल 4 जल तज्ञ आए। उन्होंने बोला कि यार यही सही काम है, अगर हमें नदी को जिंदा रखना है, पर्यावरण में जल का संवर्धन करना है, तो टॉप टू बॉटम है छोटे छोटे बांध जो है लोगों को इकट्ठा करके हम कर सकते हैं। तो उसमें हमने ज्यादा जोर दिया और गवर्नमेंट ने भी उसमें थोड़ा सा हेल्प किया और जल व्यवस्थापन का काम अच्छे तरह से शुरू हो गया। तो जंगल है, जल है, तो हमारी खेती है। खेती ने अभी जैसे बोला कि ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, हमारा परंपरागत जो बीज है वो संकलित होना चाहिए, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं का। तो बायोडायवर्सिटी विषय का भी उसमें काम शुरू हो गया। तो हमने जंगल तो है ही है, वन क्षेत्र में जो भी वैरायटी है हमने बॉटनिकल उसका सर्वे किया है जिगजैग सिस्टम से। उसका हम दर 3 साल में रजिस्टर बनाते हैं कि उस परिसर में पौधे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। 1100 एकड़ का जंगल गांव वालों ने खड़ा किया। उसमें करीब करीब 445 वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये पूरा जंगल का बॉटनिकल सर्वे किया। उसमें पक्षी कितने हैं, पक्षी के लिए जो भी फल चाहिए वो कितने प्रकार के हैं, वो पूरा नोंद हमने रखने का एक प्रयास किया। तो जंगल, जल और जमीन आ गया। लेकिन ये तीनों चीजों का अगर हमें सही सलामत अच्छी तरह से अगली पीढ़ी के लिए संवर्धित करना है, तो हमें वहां के जो लोग हैं उनको संगठित करना है। उसके मन में ये हमें रुझाना है कि पर्यावरण पर आधारित अगर जीना है तो हमारे आसपास का जो जंगल, जल, जमीन है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए लोगों को अलग अलग जगह पे टूर लेकर जाना है, उनको खेती के प्रयोग दिखाना है, गोपालन का विषय उनको दिखाना है, खेती में जो भी ऑर्गेनिक खेती होती है उसके छोटे छोटे प्लॉट उनको दिखाना है, और उसको मार्केट से कैसे लिंक कर सकते हैं इसके बारे में हमने थोड़ा सा प्रयास किया। तो ये 4 बिंदु हो गए। तो 5वां बिंदु हमारे सामने है कि अरे ये सब करते समय हमें हमारी खुद की एनर्जी चाहिए, अक्षय ऊर्जा चाहिए। हमारी खुद की अगर एनर्जी रहेगी तो हमें आगे जाकर जो भी बिजली है या पेट्रोल डीजल है उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो हमने गो आधारित खेती ये विषय उसमें जोड़ा। और गो आधारित खेती में विशेष करके बैल पर आधारित खेती हम लोग करते हैं। हमारे जो हल है, जो भी खेती के लिए संसाधन है, उसको हमने पूरे लकड़ी से बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। तो एनर्जी यानी मतलब हम ट्रैक्टर खेत में नहीं ज्यादा चलाते हैं, तो ट्रैक्टर, रोटावेटर जो भी है, तो यांत्रिक खेती नहीं, इसलिए बैलों पर आधारित खेती है। और इसमें विशेष करके हमने सोलर एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि 4-5 किसानों ने मिलकर एक कुएं पे हमने सोलर पंप लगाया और 4-5 किसान मिलकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं कि इसके लिए हमें अलग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, शासन, प्रशासन और लोगों पे इकट्ठा करके हमारे पास जो इसको हम संवर्धित कर सकते हैं। तो ये 5 बिंदु है, हमने उसको और 3 बिंदु उसमें जोड़े, जैसे कि सामूहिक जल व्यवस्थापन, सामूहिक खेती और सामूहिक मार्केटिंग यानी प्रोड्यूसर कंपनी। तो हमने सामूहिक जल व्यवस्थापन में मैंने बोला कि हमने सोलर पंप सिस्टम लगाया। करीब करीब 10 गांवों में हमने पीने का पानी और सामूहिक खेती के लिए जल का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये पर्यावरण में जो जल है उसका हमें स्टोरेज भी करना है, उसको अगली पीढ़ी के लिए संवर्धित भी करना है, उसका यूज भी करना है। तो इसमें करीब करीब 140 किसान हमने जोड़े हैं जो भी ग्रुप से काम करते हैं। आगे जाकर हमने सोचा कि उसमें जो भी ये ट्राइबल एरिया है पूरा, तो यहाँ जो भी अनाज होती है वो तो ऑर्गेनिक है, उसको सही कीमत भी मिलनी चाहिए और लोगों के पास वो पहुंचना भी चाहिए। तो उसको मार्केट लिंक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ जो विशेष करके चावल चावल और दाल, ये 2 चीजें उसमें मार्केट में लेने का प्रयास किया है। उसमें हमने 45 गांवों को जोड़ा है।
45 गाँव मिलकर हमने 1016 किसानों की एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, और कंपनी के माध्यम से हम यहाँ से उसको सही दाम मिलना चाहिए और लोगों को अच्छा भोजन भी मिलना चाहिए, इसलिए वो रचना बिठाई है। ये करते समय ये काम एक गांव या एक क्लस्टर में नहीं होना चाहिए, वो तो पूरा देश भर में जाना चाहिए। तो बारीपाड़ा पर 2 लोगों ने पीएचडी की है। कनाडा में मैनिटोबा यूनिवर्सिटी में शैलेश शुक्ला करके, उन्होंने 2003 में बारीपाड़ा पर एक शोध निबंध लिखा है, और पिछले 2 साल पहले जर्मनी में हेडलबर्ग विद्यापीठ में सही हल्दुले करके उन्होंने परंपरागत पीक पद्धति यानी बायोडाइवर्सिटी इस विषय पर पीएचडी पूरी की है। उनका दोनों का हमने सही इस्तेमाल और गाँव के लिए कैसा उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें शैलेश शुक्ला की संकल्पना थी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो बन गया 2002 में, लेकिन हमें ये काम जल्दी से करना चाहिए। तो बारीपाड़ा में 2003 में हमने वन सब्जी प्रतियोगिता पहली बार रखी, जो अभी पूरे देश में वो शुरू हो चुके हैं। उसमें ये क्या है कि जो महिलाएं, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और महिलाओं के पास जो परंपरागत ज्ञान है वो अगले पीढ़ी के लिए जाना चाहिए, वो संवर्धित भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए। इसलिए जो भी वन में सब्जी मिलती है उसको ढूंढ के लाना है, और वो सब्जी तैयार करके प्रदर्शनी में रखना है। तो विशेष यानी करीब-करीब 5-6 गाँव उसमें जुड़ गए हैं, और पिछले 2 साल पहले करीब-करीब 200 महिलाओं ने उसमें भाग लिया। एक महिला ने 110 से ज्यादा वैरायटी सब्जी की उसमें लाई। तो ये परंपरागत ज्ञान का भी संवर्धन है, और हमारे पास जो भी परंपरागत सब्जियां उसका भी संवर्धन उसमें होता है। तो ये वन भाजी प्रतियोगिता एक बहुत अच्छा सफल प्रयोग बारीपाड़ा का रहा है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट आते हैं, जैसे देश भर में से 4 आईआईटी के स्टूडेंट आ गए, रुड़की से आए, दिल्ली से आए, खड़गपुर से आए, बम्बई आईआईटी से आए। तो ये सब जो स्टूडेंट आते हैं उसका भी सही इस्तेमाल हम करते हैं। पूरा गांव का हमने सर्वे किया है कि गांव में पढ़ाई कहाँ तक पहुंचे है, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी क्या-क्या है, यहाँ हम एक स्टडी के लिए एक लाइब्रेरी बना सकते हैं क्या? ये सब चीजें उसमें करने का प्रयास किया, और इसका भी एक सही इस्तेमाल हुआ है। एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट आते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट से हर 1 साल में स्टडी के लिए 1 महीने के लिए कुछ देश भर में से युवा आते हैं, 4-5 युवक आते हैं। बेंगलोर में हाजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वहां से भी कुछ लोग आते हैं। तो इनका सभी का हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, पूरे देश भर में ये विषय कैसे जा सकता है, और ये परंपरागत विषय है, उसको परंपरागत जोड़ देकर हमें ग्राउंड लेवल पर हमें खाली पर्यावरण पर लेक्चर देकर पर्यावरण पर्यावरण बोलकर नहीं चलने वाला। तो हमें गाँव में एक जब तक हम करते नहीं, गाँव जब तक खड़ा होता नहीं, लोगों का सहयोग जब तक नहीं मिलता, हम सक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो गाँव को जोड़ने के लिए हमें योजक है, रीढ़ है, वनवासी कलाश्रम है, और आप जैसे बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। हम उन सभी का सही इस्तेमाल करके शाश्वत विकास हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रयास किया है। उसमें हमने 10 गाँव का एक क्लस्टर बनाया है। एक गाँव नहीं करेंगे हम, 10-11 गाँव का इकट्ठा करेंगे, और 10 गाँव मिलकर हम डेवलपमेंट के लिए क्या सोचते हैं पर्यावरण पर आधारित। उसमें हम त्रैमासिक हमारी बैठक होती है। बैठक में हमारे जंगल का कौन से एरिया में कौन सा वैरायटी ज्यादा है उसका भी हम सर्वे करते हैं बायोडायवर्सिटी का, और उसको हमने प्रोसीडिंग में लिखना भी शुरू कर दिया है। आगे जाकर हमने सामूहिक वन अधिकार, ये जो विषय है, कानून तो बन गया है लेकिन कितना वो इम्प्लीमेंट हुआ है नीचे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो देश भर में वनवासी कलाश्रम काम कर रहे हैं, लेकिन धुलिया जिले में हमने एक 45 गाँव का एक समूह बनाया, और 45 गाँवों को सामूहिक वन अधिकार मिलाने के लिए प्रयास किया, और गवर्नमेंट से उनको प्रमाण पत्र मिला। यानी ग्राम सभा को वो वर्ग हो गया। करीब-करीब 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो कि गाँव वालों के पास पहुँच गया। तो 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र भी डेवलप करने के लिए हमें क्या-क्या प्लानिंग करना है, इसके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं। तो इस पर ये सब काम चल रहा है। सोलर में हमने खाली सोलर पंप नहीं किया, सोलर ड्राई सिस्टम भी उसमें थोड़ी शुरू की। सोलर कुकर भी हमने थोड़ा प्रयास किया है, और यूएनडीपी का एक हमने प्रोजेक्ट लिया था स्मोकलेस चूल्हा का, जो महिला में आँख की बीमारी, हृदय में कुछ धुआं जाता है उसकी बीमारी, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए यूएनडीपी का एक हमने स्मोकलेस चूल्हा का एक प्रोजेक्ट लिया, वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। अभी-अभी हमने जो एक नई योजना है 2018 की, पंतप्रधान वन धन विकास केंद्र, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसका एक एक मंडली बनाई है, और मंडली के माध्यम से वन उपज और कृषि उपज जो ऑर्गेनिक है, परंपरागत है, उसको मार्केट लिंक के लिए ट्राइफेड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रयोग बारीपाड़ा में भी शुरू हो चुका है। तो इसमें विशेष करके परंपरागत खेती, प्रोड्यूसर कंपनी, और ये जो शुरू में जो मैंने बोले कि जंगल, जमीन, जन, जानवर और इंसान, यानी 5 बिंदु है।
सामूहिक जल व्यवस्थापन, सामूहिक खेती और सामूहिक मार्केटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी, 8 बिंदु पर आधारित हम हमारा शाश्वत विकास कर सकते हैं क्या? उसमें सतत प्रयोग करने की आवश्यकता है और उसमें अलग अलग लोगों को जुड़ना भी है। कोई तज्ञ आएंगे, उसका भी सही इस्तेमाल करेंगे और गांव लेवल पे हमें लोकल भाषा में उसको हम कैसे उनको समझाते हैं, उस पर आधारित हमें आगे सदा पूरा ये ले जाना पड़ेगा। तो इसमें ज्यादातर हमने अभी जैव विविधता है, सामूहिक वन अधिकार है, जल जंगल, इस बिंदु पर हमारा काम चल रहा है। मैं अभी इस समय इतना ही बोलूंगा कि अगर किसी को समय मिलता है तो आप जरूर बारीपाड़ा एक बार आइएगा। बारीपाड़ा और आसपास के गांव में जो काम चल रहा है उसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सुझाव भी दे सकते हैं और आसपास में जो काम चल रहा है वो आप देख भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोना माती जो नाम दिया है ये बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हमारी जो जमीन है हम उसको तो माँ कहते हैं, जमीन को माँ ही करते हैं, धरती माता को हम उसको वंदन करते हैं। सभी कोई भी पेड़ लगाना है या अनाज लगाना है तो हमारा ये बैंक बैलेंस है। अगर हमारी जमीन उपजाऊ रहेगी तो अगली पीढ़ी जीने वाली है, अगर जमीन बंजर हो गई तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन इसका संवर्धन करना ही पड़ेगा और इस पर आधारित हमें हमारा शाश्वत विकास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवश्यकता जितनी उतना ही लेना है। हमारी आवश्यकता जितना हम कम करेंगे इतना हम शाश्वत और सुखी रहेंगे, ऐसा लगता है। तो मैं विशेष करके सिप्रा मैडम आप का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने के लिए मुझे संधि दी। मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती, हिंदी में मैंने थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया है और हमें जो जो संस्था सहयोग कर रहे हैं हम उस संस्था के माध्यम से जुड़े हैं। वो वनवासी कल्याण आश्रम है, योजक है, रीड्स है, उन संस्थाओं का हमें शुरू से और आज तक पूरा सहयोग मिल रहा है। उनको साथ लेकर हम अगला काम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने बारीपाड़ा का विषय रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चेतराम जी, आपने इतनी सारी जानकारी और बहुत सारा जो आपने काम किया है उसको समेटने का प्रयत्न किया। और मुझे लगता है कि जो धन्यवाद मेरा नहीं, मुझे लगता है कि मंजू मैम और ये जो किसान सेवा समिति और जो सारी कम्युनिटी जो मिलकर काम कर रही है उनका होना चाहिए, और आपने समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चेतराम जी। कैथरीन ने लिखा है आपकी बात में, क्योंकि उनको हाँ अंग्रेजी में पहुंचा रही थी, कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतना फ्लो था तो मैं शायद ठीक से कम्युनिकेट कर पाई। बट कैथरीन हैज रिटन दैट कांट वेट टू विजिट, तो उनका मन है आपके यहाँ आने का। और मुझे लगता है कि मंजू मैम के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये जो सब काम हम लोग भी करते हैं राजस्थान में, तो वो भी इसी प्रकार का काम है और हमको एक दूसरे से सीखने का बहुत सारा मौका है। सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड ओवर टू यू Madam Manju Joshi ji, Secretary CECOEDECON, for your remarks. सभी आयोजकों को धन्यवाद, मन से धन्यवाद। Thank you. Thank you, Shipra ji. Dear friends, this year's World Environment Day theme, ecosystem restoration, very well resonate with the efforts of CECOEDECON over the past 38 years. CECOEDECON's various efforts to promote environmental sustainability, including soil and water conservation, watershed development, social forestry, pasture land development, sustainable agriculture, biodiversity conservation, etc., have contributed substantially to the promotion of eco-generation in our working areas. Direct interventions of CECOEDECON with the marginalized communities on the above issues have also helped to improve the lives and livelihoods of the poor to a great extent. As our organization works at the local, state, national, regional, and global level, we have also been able to engage with the stakeholders on international processes related to the environment, climate change, SDG, etc., through our various networking and advocacy efforts. The production of this video, Sona Maati, signifies our efforts towards environmental awareness through the use of new technologies and media. In continuations of our recent production on water conservation issues and our plan to use digital media to promote elder care concern also.
I want to reiterate that all parts of India, including the state of Rajasthan, have a rich inheritance of biodiversity and indigenous food traditions, which are eco-friendly. They need to be preserved and promoted. As the United Nations has declared this as the ecosystem restoration decade, we hope that the video released today will not just be our contribution as a resource material to promote diet diversity, keeping the indigenous knowledge and traditions, but will also help in mobilizing coordinated action towards this goal. I wish to place my sincere appreciation to CECOEDECON's team and especially Dr. Shipra Mathur and Mr. Aishwarya Goyal for their efforts in accomplishing this task in time. I'm extremely grateful to Ms. Catherine for taking out the time from her busy schedule and for accepting our request to launch Sona Maati. We have always cherished our relationship with the US Embassy and are grateful for their support in undertaking various interventions over the years, from issues ranging from women empowerment to promoting smart cities. We hope to continue to partner with the US Embassy in the future to promote environment conservation and do our bit to strengthen the US India partnership. I'm also thankful to Chaitramji for sharing his experiences and motivating our team to continue the efforts towards the empowerment of the poor and the marginalized. We hope to continue this association and sharing in the times to come. चित्राम जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और आपका और हमारा काम बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो हमारे जो सामुदायिक संगठन है वो लोग भी आपके यहाँ आके काम देख सकते हैं और आप भी हमारे यहाँ पधारिए और हमारे काम को देखिए। आपके अनुभव का फायदा हमको मिलेगा और हमारा जो छोटा मोटा काम है, हमारे अनुभव है, शायद आपके भी काम को और अच्छा उसमें मदद मिल सके। तो ये जो हमारा संबंध है ये हमेशा लगातार बने रहेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। I would also like to thank the participants for joining us for this event and for your continued support. मैं अपने जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, चाहे वो एकेडमिक से हो, चाहे सामुदायिक संगठन से हो, चाहे मेरे टीम मेंबर हो, और भी बहुत सारे लोग जो इसमें इच्छुक थे वो सब लोग जुड़े। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। ओवर टू शिप्रा जी। Thank you, Manju ma'am. It's an inspiring journey with all of you. And thanks to Tarini from US Embassy for setting it up and connecting our bond with beautiful people like Catherine. Catherine's immense thanks again. And we are so grateful that your presence is so important for all of us because it gives us a lot of energy. And because this is the time when we all are, stuck and we are sitting home, not able to do anything on ground, and we all are people, Manju ma'am and Vibhuti, and we all are the entire team, because we are always there in the field. But this is the only possibility that we could meet virtually, and we look forward to have you in Rajasthan because the kind of work we are doing and the CECOEDECON organization is doing, I think it cannot be put in words. So you are welcome to be a part of this whole effort in Rajasthan, and we look forward to meet you soon. Thank you so much for reaching out. Thank you to Tarini for connecting this and for inviting me to do this. I quite agree. Being stuck at home is so difficult, but I am inspired seeing the Sona Maati film. I can almost smell the spices heating up and cannot wait to come and visit. I am praying for getting through this, all of us safely, where we can resume seeing each other. And I want to come and see in person all the great work. So thank you for inspiring me to go about the rest of my day today with these images of Sona Maati in my head. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.
Thank you, everyone. Bye. Thank you, Tarini. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.